in childhood, I used to become a teacher because teacher know all the difficulties what a student face. That's all. All right, we are talking about childhood memories, and that was Shivam Gupta with his presentation on childhood memories. Now, stand up. Introduce yourself. Switch on your log in with your mobile and switch on your camera and then speak. Sit down. Switch on your camera and speak. What's your name? Raise your hands. Ritik. Unmute. Good morning, all of you. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ritik Kumar. I am pursuing from BCA, and I am from Rohtas district, and Have you attended all the classes? Have you attended the classes? no, ma'am. There are questions which you need to answer. And if you have not attended, attend some doubt classes so that you can be updated, like how others are speaking. Next student. Yes. We are talking on day 3. First was introduction class. Second was your daily routine. And third was your childhood memories. Now tell me what have you prepared? Yes, Dilip Kumar. Okay, I'm unmuting everybody. Okay, unmute. Yes, ma'am. I am audible, ma'am. Yes. First of all, good afternoon, everyone. Today, my view on the topic about my childhood memories. Now I am 18. I have already 12. The details of my childhood memories. But I can still remember some sweet and bitter memories of those golden days. My parents looked after me very carefully and loved me very much. But my grandma is my best friend because she used to tell me stories. The first day of my school was very funny because I went to a school with my grandma.
and did not allow her to leave me alone in the classroom. I kept sitting, her sitting all along by my side. I was very happy and contented. But one day, my father brought me back home only to sorry, ma'am, only to let me know that my grandma was no more. I was then 10 year I was then 10-year old. I realized for the first time what death was. It was the saddest day of my childhood. When I remember my childhood days, I feel a pollution of both joy and sorrow in my life. That's all about me, ma'am, my childhood memory. Thank you, ma'am. All right, next. Yes, start. Log in and Completed, start. ma'am. Yes, I know. Why nobody is raising his or her hand? सिकंदर घर पे क्यों हो तुम? Yeah, continue. Okay. Could I say something, ma'am, about my childhood memories? Continue, Sikandar. Ma'am, there are lots of sound over there. वो घड़ी आचड़ी आचड़ी अनुभव तुमने माल I think काबिल one wanted हाँ, to से कुछ want याद to आ say गया? something. 1 minute, Karo. Let me mute everybody. Yes, Sikandar. Yes, ma'am. Now I am going to start. Hello, everyone. My name is Sikandar Kumar, and I am here, and I am going to sharing my an event which happens in the past in my childhood. That is vivid memories of my childhood, which I want to share with you. Now let's start. Actually, that is the that you have also you can also learn from my childhood memories, which has happened with me. Okay, now I start. When I was around, you can say 10 to 12 years old, I didn't able to recall exactly. Then I and my friends, we used to go to the ITI fields where we used to play football. Okay, and my all friends except me, my all friends came there by bicycle, but I could not able to go there by bicycles. It's not like that. It's not like that. I have no bicycles, although I have a bicycle, but I could not able to go there because the reason is because I don't able to. I didn't able to know how to ride a bicycle. So this is the reason.
Then what will happen there? One Then minute, Sikandar. I didn't able to nahi. I was not able to. I could not do it. It did not able to nahi hoga. I was not able to ride a bicycle. Right? Continue. Okay, I'm right. I was not able to ride a bicycle. Then one evening I decided to. One evening I decided all the Decide- tense will be in the past. Okay. One evening I decided to know and learn how to ride a bicycle. Uh, for these reasons, I consult my brother and said that, brother, I want to learn how to ride a bicycle. Then he denied. Then I feel very odd and I feel very sad because he don't get any time. So then I said, I request him to please take a time for teach me how to ride a bicycle. Then he continuously denied me. He used to say, I cannot teach you because I have no any time further time to teach you. Then but I don't defeat. I didn't defeat. I continuously request him. But he could not do anything in front of my insistence, and he had to agree with me. Then he said, I will teach you, but whenever I get time, then I will teach you. Then he used to get time in the evening. Then he said, I will teach you in the evening. Then I was happy to listen that my brother teach me how to learn how to ride a bicycle. Okay, then fine. Then what will happen here is, then he whenever he get time in the evening, he used to teach me, and I continuously learn how to ride a bicycle. Yes, Sikandar. Done? Hello? So what will happen after that? Here is, then my brother teach me continuously, but I began to learn how to write. Then when I learn a little bit, something you can say, then one day what will happen? My brother. One day what happened? What will happen is the future expression. Oh, sorry. What happened one day? My brother kept the back seat. You imagine the back seat of cycle, and I sit on the what is called front seat. You can say I sit on the front seat. I sat. Then sat. Oh, sorry. I sat on the front seat. Then I ride slowly. Then my brother leave me. Left me. Left me. I continuously pandal marna. I paddled. Paddled. But I go. So after that, I went. Paddle. मेरा सारा फॉर्म ऑफ वर्ब हो रहा है ना, प्रेजेंट फॉर्म में हो रहा है सारा कुछ. सारे एक बार ले आओ पास्ट टेंस में. राइट. जो भी वर्ड तुमको यूज करना है ना सिकंदर, उन वर्ड्स को पहले पास्ट टेंस में ले लो, एक जमा कर लो और उसको सेलेक्ट करते रहो. मैं साइकिल करता, पैडलिंग करता हूं. पैडल्ड. ओके. कंटिन्यू. I continuously paddled. After that, what happens? I bumped into a woman. Unfortunately, but this is a matter of sorrow. But I am happy to say that the women, there is no any unappropriate things and any you can say miraculous. There is no any कोई expression नहीं सही है. There is no. Okay. Happened with women.
but this is the matter of sorrow. As soon as I bumped into the women's, I fall down into the stone, and my nose has been cut. क्या बोलते हैं? Nose कट जाना, नक मतलब नाक पर चोट लग जाना. My nose has been cut. Okay, right, ma'am. Right. And there are lots of blood come out. मैम इसको क्या बोलेंगे? बहुत सारा खून निकलने लगा नाक से. I bled. I bled by my nose. I bled. I bled by I my got my nose. nose and I bled. Okay. After that, My nose was bleeding. oh yes, ma'am. बहुत सारा खून निकलने लगा. What? Profusely. Profusely. Profusly. No talking. बहुत ज्यादा खून बह जाना. Profusely. Right? Look at the chat box. Profusely. Okay. Profusely. Profusely. So, what did happen after that? My brother came to me and took me into the hospital. After around 15 to 20 days, I recovered from that, from my hospitality. I was discharged from the hospital. I was discharged. Yes, I was discharged from that hospital, and after that I came here. I came my home, and this is the things which you learn. But my passions to learn how to ride a bicycle has not been died. After some days I decide to learn how to learn a bicycle. I decided how to learn a bicycle. Okay. Then I told to my brother to teach us. Then I teach told me. my brother. Told my brother I to teach told me. my brother. Told plus personal pronoun. My. Your. He told. I told my brother. Told to my brother. Told teach my me. brother. Oh, I told my brother to teach me, but he denied. As you imagine. Then I told to my friends to teach me. Told my friends. My friends to teach me. Then he helped me so much. After that, I learn continuously. One day, what will happen when I One day, an incident happened. One day it happened. One day it so happened. एक बार ऐसा हुआ कि one day it so happened. One day it so happened. Okay. When I learned a little bit, you can say not properly, but you can say properly. Then when I was riding the bike, okay, a bicycle. Then I unfortunately I fall down into drain, and again I fell down. I fell down into the drain. That is very big drain, and I jumped into that drain. Sorry for that. After that, I fell down into the drain, and my bicycle has been damaged, and I am wounded by my elbow and knee, and wounded by my knee and my elbow. Again, some people take me out from that drain. Took me out from that drain, and after that
I went to my home. Then when my father, as soon as my father look at me, then he without showing mercy, he slapped me because he was very angry. And this, in this way, after that I learned how to ride bicycles. I had to face lots of difficulty to learn how to ride bicycles. Not only for that, I learned after some years I learned how to ride bike. This is the passion which came me out from that mentality. All right, Sikandar, that was a good presentation. Your childhood memory and an Yes, ma'am. incident. Thank with- you for everyone to listen to me attentively. Okay, thank you, ma'am. All right. Let us continue with the pair work today. We have presentation तो होता रहेगा, हर बार होता है, और कुछ लोगों को presentation का टाइम मिलता है, मौका मिलता है, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ मौका मिल जाता है. We are coming next to pair work, and pair work में I need 2 persons to speak. Ma'am, Sharing the screen with you. Yes, Sikandar. ma'am, I have a question. Could I ask you? Okay. Ma'am, in the previous class, you removed me, but I attend your classes by YouTube. Ma'am, there is a sentence. I have some difficulty. You can say some problem. I preferred keeping to myself. I preferred keeping to myself expression. Myself. हाँ, ठीक है. Myself, ma'am. हाँ. Myself. What is the meaning? हाँ. स्वयं. हाँ, myself. Himself बोलेंगे तो वो. हाँ, he preferred keeping to himself. I preferred keeping to myself. She preferred keeping to herself. They preferred keeping to themselves. मतलब वो लोग अपने आप में ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं. So when I was a child, I preferred keeping to myself. Okay, thank you, ma'am. Now keep quiet. Those who have not got the chance today, they will come up in pair work. The students who are speaking, they will be turned out of the class. Okay, there are some other questions also. You may write down. Did you participate in any musical instrument? Did you play any musical instrument? भूल जाते हैं. आपके क्लास में सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए हमको. यही तो तरीका पढ़ने का आप लोगों का है. वही हो रहा है, भैंस के आगे बीन बजाना. तुम एनोटेट कर रहे हो, मैं हम कुछ शेयर कर रहे हैं, बहुत मेहनत से लिखा गया ये मॉड्यूल है, और जिसको तुम कदर नहीं कर रहे हो, तुम उस पर कुछ एनोटेट कर रहे हो. अभी कुछ कह देंगे तो बुरा लग जाएगा. कह दूं क्या? बंदर क्या जाने आदि का स्वाद. वही करना पड़ेगा. एनोटेट क्यों करते हैं आप लोग स्क्रीन पे? डोंट यू डेयर टच द स्क्रीन. इतनी हिम्मत कहां से तेरे को आती है पता नहीं. और जो बोल रहे हैं मैं एब्सेंट था, मैं यहाँ था वहां था, उनको तो पीछे का बैकलॉग करना पड़ेगा. बिकॉज वी आर फिनिश डे 1, वी आर फिनिश डे 2, हम लोग डे 3 पे चल रहे हैं. तो डे 1 ही करना नहीं आएगा तो डे 2 एंड 3 तो बहुत दूर की बात हो जाती है. और कौन है जो लगातार बात कर रहे हैं? हमको डाउट भी किसी पर होगा ना, सीधे क्लास से बाहर निकाल देंगे. Number 7, sorry, number 6, did you play any musical instrument? जो कि पहले हो चुका था. Did you participate in any sports? क्या आप किसी sports में participate करते थे? क्या आप किसी function, extra curricular activity में participate करते थे स्कूल में? I used to participate. Answers आप लिख लीजिए तो prepare कर लेंगे आप. Question number 7, did you have any pets?
पेट लोग रखते हैं, either you keep dogs or cats or birds. सब क्वेश्चन का एक साइकोलॉजिकल रीजन है. हाँ क्यों नहीं. नंबर 8, व्हाट वर योर हॉबीज एज अ चाइल्ड? बचपन में तेरी हॉबीज क्या होती थी? स्टैम्प कलेक्शन, पिक्चर कलेक्शन. बच्चों की अजीब अजीब हॉबीज हुआ करती थी. मेरी भी हॉबीज थी. आई यूज्ड टू कलेक्ट ब्रोकन बैंगल्स. कहीं किसी की बैंगल्स किसी का टूट गया, उसको लेके रख लेते थे. और उसके लिए इतने परेशान होते थे कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते थे, जब सब लोग सोया हुआ है तो उठ जाते थे, पूरे मोहल्ले में घूम जाते थे. और जहां जहां मुझे मिलता था, जहां पूरा कचरा फेंका जाता है, गार्बेज, वहां से, और बड़े खुश होते थे, आज तो मुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा मिला. देयर वाज एक इमली का दाना होता है ना, इमली का दाना होता है ना, उसको बीज से अगर तोड़ दोगे, उसका बीज, सीड ऑफ द टैमरिंड, इमली, तो एक तरफ व्हाइट एक ब्लैक रहता है, तो उसको चाई बोलते हैं हम लोग. उसको ऐसे करके खेलते थे, 4, 8, और चूड़ी से करते थे. 4 मतलब 1, 2, 3, 4. तो उसके लिए कलेक्शन मेरे पास बहुत थी. और कभी एक बहुत अच्छा बैंगल खो गया तो उसके लिए हम न्यू बैंगल तक खरीद लेते थे कि, लेकिन वो पता जो चुन के आता था, कहीं से गए और मिल गया तो दैट वाज लाइक खजाना मिल गया. तो बचपन की हॉबीज सबकी, आपकी भी होगी. कोई पत्थर इकट्ठा करते हैं, कोई पिक्चर्स इकट्ठा करते हैं. एक बच्चे ने कहा, आपका मॉडल पढ़ा रहे थे 3-4 साल पहले, एक बच्चे ने कहा, मैम मेरा बहुत पिक्यूलियर हॉबी था. बोले क्या? कि मैं बाहर निकल के सबका घर बंद कर देता था बाहर से. मैं बाहर निकला और जिसका जिसका खुला देखा बंद कर दिया. अपने अपने घर में भी निकला, जिसका भी खुला है बाहर से बंद कर दो, और फिर मैं भूल जाता था. एक बार उसने कहा कि उसके दादाजी वॉशरूम गए और वो, उसकी मम्मी थी या दादाजी, मम्मी चली गई थी बाहर शॉपिंग करने के लिए, और 2-3-4 घंटे वो नहीं थी घर में. और इनके दादाजी थे वो नहाने गए, नाना जी नहाने गए थे. अब वो बाथरूम में गए नहीं कि बंद कर दिया बाहर से. उसके बाद वो सो गया. इसकी मम्मी आई तो कोई खोल ही नहीं रहा दरवाजा, कोई खोल ही नहीं रहा. तो गार्ड को बुलाया गया और फिर तोड़ा गया. ये जनाब जी सोए हुए थे और नाना जी थे बाथरूम में. की उस पर इतनी पिटाई पड़ी थी इसकी. उसके बाद बोला कि मैं नहीं खोलूंगा, मैं बंद कर दूंगा, किसी को नहीं खोलूंगा. क्यों? आपको बोलना है मे आई कम इन, तभी मैं खोलूंगा. जो कहीं जाए बाहर से बंद कर देंगे. इनके फादर आए थे रांची से, पटना आए हुए थे. उनकी ट्रेन थी, पहुंची पटना 11 बजे, और घंटी बजी तो ये बिल्कुल ऐसे छेक के खड़ा हो गया ऐसे. पापा जब तक अब मैं कभी नहीं बोलेगा आपको नहीं आने देंगे अंदर. उसके बाद तो इनकी पिटाई इतनी हुई. उसकी मम्मी स्कूल लेके आई, उसको स्कूल के हम प्रिंसिपल थे. तो बोले आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बहुत डिसिप्लिन बच्चा है, लेकिन इतना भी डिसिप्लिन किस काम का है कि हर किसी को बंद कर देता है. बोलता मैं आई कम इन बोलिएगा तभी खोलेंगे. यहाँ तक कि शामत आ गई इनके फादर की. वो ठंड में 11 बजे बाहर खड़े हैं, नहीं तो मैं आई कम इन बोलेंगे तभी मैं. तो बच्चों की अजीबोगरीब हैबिट होती है. एक और बच्चे ने बताया कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मैम, जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे बच्चे भी आके पोडियम में बताया करते थे कि मैम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मैं चिट्ठियां बांटा करता था. एक दिन उसको हाथ लगी मम्मी पापा के लव लेटर्स को. उसके बाद क्या था, पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी कोई चिट्ठी है बस बैग में, उसका स्कूल बैग था उसमें लेके भर के. और
तो ये बच्चों की अजीबोगरीब, मैंने अपने बारे में कहा ना, वो सुबह उठ के किसी के उठने के पहले मम्मा पिटाई भी उतनी होती थी कि तुम क्या मतलब पूरा चुनने वाली बनोगी क्या, बोले हाँ हमको अच्छा लगता है। और जूते भी नहीं, जूते पहनना इसलिए कि नहीं पहनते थे, टेक्निकल दिमाग शुरू से होता है, आईटी पता नहीं क्यों नहीं पढ़े, टेक्निकल दिमाग बहुत था कि जूते पहनेंगे तो आवाज करेगा, इससे जूता नहीं पहनना है। और बगैर जूते के पूरे 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 कचड़े में घुमाते थे। कलेक्शन ऑफ टूटी हुई बैंगल्स, बैंगल्स कभी भी शौक है। हाँ वो दिखेगा आपको। तो आपके भी क्या हॉबीज से बताएंगे आप? व्हाट वर योर हॉबीज एज अ चाइल्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू वांट टू बिकम अ मूवी स्टार? नहीं, अधिकतर तो मुझे जवाब मिला हाँ, मुझे तो मूवी स्टार बनना था, मुझे तो गवास्कर बनना था, मुझे तो सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे तो अमिताभ बच्चन बनना है। जिस समय की बात हो रही है, मतलब हमको भी अपना याद है कि क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। मेरा पैशन शुरू से था डॉक्टर बनना मुझे, बिकॉज बचपन में देखते थे कि डॉक्टर आते हैं तो कुछ दवा देते हैं, फिर मम्मी ठीक हो जाती है और बीमारियां ठीक करते हैं, तो लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा काम है ये, और उनको बहुत इज्जत मिलती है, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, उनके बैग कोई उठा रहा है, उनको कोई पहुंचाने जा रहा है, उनको पैसे भी मिलते थे, क्या नहीं बहुत अच्छा काम कि इज्जत मिलेगी सो अलग। मूवी स्टार नहीं, मूवी स्टार तो मार पिटाई हो रहा है, उनको तो कोई इज्जत नहीं, कोई पकड़े धून देता है, कोई भी डांट देता है उनको, ऐसा नहीं। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, या आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब आप लिखे क्वेश्चन, व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? The question was, what did you want to become? ये वर्कशॉप मिल रहा है ना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश वर्कशॉप आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, so it is a workshop। और इस वर्कशॉप में जो जितना पार्टिसिपेट कर रहा है वो उतना अधिक आगे बढ़ता है। इसलिए आप भी हैं, मेरी ऐड तो बचपन में अजीबोगरीब हॉबी, आपको मैं बोला कैमरा मीटिंग लाइट पे आएगा। So what did you want to become? What did you want to become? Question number 11. Did you participate in any musical, drama or painting competition? Yes से काम चलेगा नहीं, describe करना है। When I was in standard 5, I participated in a drama. क्या बने थे? मैं तो क्रो बनी थी। Were you ever awarded? मतलब क्या किसी, हेलो, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कभी आप पुरस्कृत हुए हैं? Were you थे मतलब, were you ever awarded? Yes, I was given a third prize for relay race. मुझे मिला थर्ड रेस। हाँ? नहीं, वो तो रिवॉर्ड मिलता ही नहीं, वो तो सबको मिलता है। अगर कुछ
कब मिला है? फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, नो प्राइज? तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए होंगे। क्यों स्क्रीनशॉट देना है क्या? क्या क्वेश्चन सामने आपके हैं? क्वेश्चन 6 से 11 तक सामने है। No talking. Question 12. Were you ever rewarded? I was rewarded for drama, for music, for sports. I was rewarded for poetry recitation, elocution, for painting, for singing. Singing में तो कभी नहीं मिला। चलिए now, okay. Now we are coming to pair work. Student A, student B. Now, please raise your hand, those who want to participate. सिकंदर कहाँ तो उठा हुआ है? तो बाय डिफॉल्ट उठा रहता है सिकंदर कहाँ? हाँ, क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। Keep quiet. All right, somebody read the question A and B. Partner. Read. Raise a mobile. Read. Yes. आप पेवर देख रहे हैं ना, पेवर उसको पढ़ना है, पढ़िए। ऑफलाइन वाले बच्चे को क्या सांप सूंघ गया क्या? पढ़ना है, बता रहे हैं ना। चलिए पढ़िए। पढ़ो ना, बैठ के पढ़ो, मोबाइल खोलो। All right, read. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। Can you proceed ahead, ma'am? म्यूट किया।
I lived in a small town here where no good school, so I was a board in Patna. एक मिनट मैं पढ़ देती हूँ. I lived in a small town. ध्यान दीजिएगा फिर आपको पढ़ना है. I lived in a small town. There were no good schools. So I was So I was a boarder in Patna. तो मुझे बोर्डिंग रहना पड़ा था पटने में. I was a boarder in Patna. Somebody read. Can I proceed, ma'am? ये ऑफलाइन वाले बच्चे को पता नहीं क्या हो गया. Rupesh Kumar, read. Yeah, ma'am. Can I read, ma'am? Yes. And your partner? Yes, ma'am. I am ready. ठीक है, पढ़ो. Okay, I proceed first. Okay, bro. I lived in a small town. There were no good schools, so I was boarded in Patna. I had always lived in big town and I went to a public school. Did you get good grades? Yes, I did fairly well. I was good at dramatics as well. How about you? Yes, ma'am. Scroll of. Yeah, ma'am. Ma'am, scroll up. We will proceed. Hello, ma'am. एक बार हम पढ़ देते हैं सबके लिए, उसके बाद इट विल बी इजी फॉर यू. आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन. मतलब मैं छोटे शहर में रहता था. देयर वर नो गुड स्कूल्स. और वो छोटे शहर में कोई अच्छा स्कूल कोई नहीं था, इसलिए मैं पटना में रहता था. मैं कहाँ रहता था? बोर्डिंग स्कूल में. ठीक है. आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ बिग टाउन. अब बी बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मैं हमेशा से बिग टाउन में रहा हूँ. आई वेंट टू अ पब्लिक स्कूल. और मैं पब्लिक स्कूल में गया. डिड यू गेट गुड ग्रेड्स? तुम्हारे मार्क्स कैसे हुआ करते थे? यस, आई डिड फेयरली वेल. मतलब मेरे मार्क्स अच्छे हुआ करते थे. आई वॉज गुड एट ड्रामेटिक्स एज वेल. और मुझे ड्रामा में भी मैं बहुत अच्छा था. What? How about you? और तुम? I was more into sports. मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा पसंद. मुझे मेरी रुचि ज्यादा स्पोर्ट्स में थी. I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. फिर भी उसको जवाब दे रहा है. That's nice. Sure is. सही बोल रहे हो. Sure is का मतलब होता है सही बोल रहे हो. So I have always lived in a big town. I went to a public school. Did you get good grades? Yes, I did fairly well. I was good at dramatics as well. How about you? I was more into sports. मतलब ड्रामा में मेरी इंटरेस्ट नहीं थी. मेरी इंटरेस्ट कहाँ थी? स्पोर्ट्स में. एक्सप्रेशन क्या बताया जा रहा है? More into. I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. Sure is. Now, Sikandar, if you're reading it out, read it again. With the same expression which I told you. Yes. Scroll down, man. Yes. मैंने बताया नहीं. स्मॉल टाउन में कोई बड़ा स्कूल, अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल में रख दिया गया था पटने में. Could I proceed, ma'am? Yes, proceed. I lived in a small town. There were no good schools, so I was a boarder in Patna. I have always lived in big town and I went to a public school. Did you get good grades?
Yes, I did fairly well. I was good at dramatics as well. How about you? I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. Sure is. Sure, that's nice. Sure is. Now, That's nice. Sorry. I want another pair of persons reading this out. Yes, Yes, ma'am. boys, please read. Yes, ma'am. Okay, thank you. Ma'am. Thanks, Yes, ma'am. ma'am. Thanks. All right. Yes, read. Can I start, ma'am? I live I in school. lived in small town. There were no good schools, so I was boarded in Patna. I have always lived in a big town and I went to a public school. Did you get good grades? Yes, I did fairly well. I was good at dramatics as well as. How about you? I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. It sure is. Next two. Yes, read. I lived in a small town. There were no good schools, so I was boarded Patna. I have always lived in a big town and I went to a public school. Did you get good grades? Yes, I did fairly well. I was good at the domestic as well. How about you? I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. Sure is. Yes, good. Yes, next. Kumar, Anshu Kumar and Yes, ma'am. Vishal Kumar. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Read. Ma'am, please share the screen. Yeah, okay, ma'am. Can I start? Okay, I ma'am. have a, ma'am, please scroll down, ma'am. Read. Yes, ma'am. I lived in a small town. There were no good schools, so I was a boarder in school in Patna. I have always lived in a big town and I went to a public school. Did you get good grades? Yes, I did fairly well. I was good at dramatics as well as. How about you? I was more into a I was more into a sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. Series. Done, ma'am. Okay, ma'am, done. I'm going. Next two, please read. Yes, ma'am. Can I start, ma'am? Yes. And my friends choose, ma'am. Read. I lived in a small town. There were no good school, so I was a boarder in Patna. Ma'am, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? Where's your partner? कुंदन कुमार. पहले माइक म्यूट करो ना सर.
Kundan Kumar, where are you? Yes. Did everybody write the Yes, dialogue? I क्या can लिखा start. आप लोगों ने? I lived in a small town. There were no good schools, so I was a boarder in Patna. I've always lived in a big town and I went to a public school. Did you get good marks? Good grades? Yes, I did fairly well. I was good at dramatic as well. How about you? I was more into sports. I played cricket and was in the school team. That's nice. Sure is. Sit down. Now we come to the next useful expressions. Sentence starters हैं. I would, I used to, I played, I loved, winning. Excuse me, ma'am. जितने भी expressions हैं वो लिखेंगे. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, one line, ma'am. पेयर वो का वन लाइन स्किप हो गया मैम, थोड़ा राइट डाउन करना था वन लाइन लास्ट का. कौन सा लाइन? लास्ट लाइन थोड़ा. Which line? मैम श्योर इज के ठीक, दैट इज श्योर इज का मतलब होता है हाँ सही है. यस मैम, आई नो मैम, बट श्योर इज के ठीक ऊपर एक लाइन था वो थोड़ा स्किप हो गया, नहीं लिख पाए. That's nice. That's nice. नहीं वो ये आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट. I played cricket and I was in the school. Okay, ma'am. I was more into sports का मतलब हुआ कि मुझे स्पोर्ट में ज्यादा रुचि थी. जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक्सप्रेशंस आप नहीं लिखेंगे तो नहीं बोल पाएंगे. I'm repeatedly telling you. These are very common spoken English or language. Spoken English भी है, language भी है. Structure भी सामने आपके है. जब तक लिखेंगे नहीं, you will not understand. Done, ma'am. All right, there's some useful expressions. Seventh line for you. क्या? Seventh line. कौन सेवेंथ लाइन पूछ रहे हैं? Couch potato. अच्छा ये I would तो जान रहे हैं. I would sit all day and play with my friends. I used to collect broken bangles. I used to. Ma'am, excuse me, ma'am. I played the guitar. Excuse me, I ma'am. played all day. I played all day in the summer. Ma'am. I loved winning. मतलब मुझे जीतना पसंद था. तो बच्चों को होता है ना कि गेम खेलेंगे तो अगर मैं जीतूंगी तभी खेलूंगी, नहीं तो नहीं. हारने के कगार पे मुझे नहीं खेलना. तो I loved winning. Excuse me, ma'am. 1 minute, Sikandar. I hated कि हारना पसंद नहीं था. I enjoyed cartoon shows. I enjoyed what? Cartoon shows. I was a couch potato. इसका मतलब है कि मैं दिन भर टीवी देखता था. टीवी देखता था.
काउच मतलब सोफे पे बैठ के टीवी के सामने। While sports, sir. Why was crouching? Next, I was a spoiled sport. मतलब क्या? नहीं, जैसे माँ पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम चलो मुझे नहीं जाना, सबका मजा किरकिरा कर देते थे। आज कोई चीज बनी है, मुझे नहीं खाना खाना। एक जिद्दी बच्चा होता है ना, स्पॉइल लतखोर नहीं, लतखोर को तो लोग मारते हैं। नखरा तेल लगवाने वाला बिगड़ा हुआ बच्चा रात को बोल रहा है 12 बजे आइसक्रीम खाना है, नहीं तो लौट के यहाँ से वहां लौट रहे, अभी लाओ अभी लाओ। मैम खांसी भी हो रहा है। बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, माँ बाप बिगाड़ देते हैं। बहुत सारा बच्चे भी माँ बाप को बिगाड़ देते हैं मैम। हाँ सही है। I was a fussy eater, खाने में नखरा करना, फसी। नहीं खाऊंगा। फसी eater, आज क्या बना है? गोभी, मुझे नहीं खाना है। Stop it. Why are you talking? जब कहा जाता है करना है प्रेजेंटेशन तो चुप, जब चुप रहने के लिए कहा जाता है तो बोलेंगे याप 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 याप। फसी ईटर, फर्स्ट मतलब होता है जो बहुत नखरा करता है। ये ऐसे क्यों नहीं रखा हुआ है? ये क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत टीचर्स भी होते हैं, बोलो मामा ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ पूछेगा। बच्चे बोलेंगे मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना ही खाना है। अब माँ क्या करती है, नेक्स्ट डे उसके मन का खाना बनता है, आज ये क्यों बना, आज मुझे मूड नहीं कर रहा खाने का, आज मुझे नहीं खाना है, मुझे मैगी खाना है। मैगी बन गया, ये ठंडा क्यों हो गया? मेरे जैसा पैर। माई सन, उसको बहुत नखरा है, वो अपना स्पोर्ट्स जिम करके आएगा, अभी भी क्या हो गया, जिम करके आएगा, कहीं से कुछ करके आएगा, क्रिकेट खेलता हूँ और मामा बहुत भूख लगी, जब तक हम नहा करके आते हैं बना रेडी रखो। वो वॉशरूम में गया, खाना बनना शुरू हुआ, निकला है सामने प्लेट पे आता है, ये रोटी तो फुली होनी चाहिए ना, ये पचक कैसे गया, छोड़ नहीं खाना। ऐसे बच्चे जो बचपन में नखरा करते हैं ना, उसको सुधारा नहीं जाता है, तो बड़े होकर के सर पे चढ़ जाता है। हम जेल में। वैसे वैसे मैम मेरे जैसा पेरेंट्स रहे तो ऐसे ऐसे बच्चे को बोले जाओ मत खाओ। हाँ वही करना चाहिए, मजबूरी रहता है पेरेंट्स का भाई। नहीं खाना है। एक बार तो हमने किया था, नहीं खाना है, माय डॉटर सेड पनीर बन गई तो नहीं खाना है। मैंने क्या किया, सारा टेबल से खाना हटा दिया, मैंने दे दिया रोटी और नमक, खाओ।
It is punishment, ma'am. That was good, ma'am. That was good punishment, ma'am. Yes. Ma'am, I was a Kind of- couch potato, ma'am. Please repeat again, ma'am. I was couch potato. Used to watch TV. मतलब जो जिसको टीवी देखने की लत हो जाती है, मतलब दिन भर बैठ के टीवी के सामने. What is the pronunciation of couch, ma'am? couch काउच, पढ़ेंगे या काउच का मतलब होता है सोफा. काउ पोटैटो? अच्छा वर्ड. काउच, काउच. मैम काउच पोटैटो फ्रेज फ्रेज है मैम यार. ये इडियम है. ओके मैम. Why are you talking? Who are you talking? Why are you talking? Who are you talking? Stop talking. Bad elements of society. ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको सुनाना है नेक्स्ट क्लास में. Okay, ma'am. अभी नहीं सुनो, सीखोगे अगले क्लास में, सीधे क्लास से बाहर भागा. मतलब मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था. तो पार्टी में जा रहे, चलो चलो, नहीं जाएंगे. अब उसकी वजह से बाकी लोग भी नहीं जा पाते. दूसरे का अभी भी है. स्पॉइल करना, बर्बाद कर देना. लगा देता था. अरे बाप रे. वो अलग लेवल का स्पॉइल था. नहीं, स्कूल में लीडरशिप बनते हैं, मैम का नकल करते हैं. मैम जो दबांग. All right, the next statement. I threw tantrums every now and then. Keep quiet. Tantrum. अब आप चुप रहेंगे तब तक बताएंगे ना. जो बच्चे ऑनलाइन है, सुन रहे हैं? या मैम. Yes, ma'am. You are audible. छोड़िए, ऑफलाइन वाले बच्चे तो समझ गए. Ma'am, I have one question. Could I ask you? पूछो. टैंट्रम मतलब होता है जो सामान फेंक रहे हैं, गुस्सा में बदमाशी कर रहे हैं, लौट रहे हैं, चीजों को उठा के फेंक रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, नाटक करना उसका. सामान फेंकना गुस्सा में, अब लोग भी फेंके होंगे. हम सीरियसली नाटक होता है. उठाया फेंक दिया कहीं. मैंने बहुत करा है. फोड़ फोड़. आतंकी, आतंकी बच्चे. क्या बोलते हैं घर पे? सन की धर लिया है उसको कहते हैं. यहाँ एक फैकल्टी है, आईटी के फैकल्टी, बोले कि मेरे बेटा को दुकान देना बंद कर दिया. मैंने कहा सर, वो दुकान जाता है तो जहाँ भी वो खरीदने का हो जाएगा, उसके बाद तो हाँ, जब तक खरीदेगा नहीं वो बोलते लगेगा रोड पे. जब तक कि उसको खरीदिएगा नहीं. हेलो रुपेश. हाँ बोलो. उसी का मतलब होता है थ्रोइंग टैंट्रम. बोलो भाई. 1 मिनट. ऐसे आप लोग नहीं सुनिएगा ना. To throw, keep quiet. This is live streaming. इतना हल्ला करोगे?
All right, Sikandar, are you listening? टैंट्रम का मतलब होता है, throwing tantrum का मतलब होता है गुस्सा में सामान फेंकना, गुस्सा दिखाना, ठीक है?